Hello, everyone. Welcome back to the Organon classroom with Dr. Gazala. Here we are with episode 4 of our lecture series for the chronic miasms by Dr. J.H. Allen. In our last video, we spoke extensively about pathology, the role of skin eruptions in preserving the vital force, and the concept of suppression. Today, in this lecture, we are going to take a step higher and start with Psora, as given by J.H. Allen. All right, then, let's start the lecture for today. The dynamic depths. Okay, so I've given this title keeping in mind how deep this miasm is. The name itself suggests how deep its manifestations are going to be. The effect of this miasm stays along for generations together, guys. Okay, so something that you can never overlook or overrule while taking cases. All right, so the dynamic depth, that is the Soric miasm by J.H. Allen. Along with that, we will also shed some more light on the concept of suppression, and then we go towards the architecture of true cure, which means we are going to study the way of our cure. Okay, so starting with this, a quick recap, something which is very important, like I told in the last lecture as well. You are going to write about this irrespective of whatever question is asked for J.H. Allen. You are going to write in the introduction part about these two paradigms. All right, the material illusion and the dynamic reality. Now, what are these? Orthodox school understood about the workout thing, that is the cellular pathology, and Hahnemannian school, that is the Hahnemannian principle of understanding everything to be dynamic. ओके ये आप लिखोगे, ये आप बोलोगे तो एक आइडिया पड़ता है कि नो यू गाइज एक्चुअली नो what this is going to start with and where this is going to end. Okay, और ये basis बन जाता है. Allen has refuted quite a lot of stuff based only on these points. ऑल राइट, तो जो अपना बैटल था ऑफ मेडिकल पैराडाइम, वेरी फर्स्ट स्लाइड, आई मीन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, सेम इज गोइंग टू बी रिपीटेड हियर एज वेल. ठीक है, तो मटेरियल इल्यूजन क्या था अपना? ऑर्थोडॉक्स स्कूल फोकसेस ऑन द फिजियोकेमिकल मेथड्स एंड मटेरियल causes, that is the bacteria, viruses, etc. It fails to recognize the true origin of chronic disease. Okay, dynamic reality kya hai? The one that we follow, the one that Hahnemann followed. Everything in the universe of God is dynamic in its origin. A dynamic law controls every vibration of matter down to the smallest atom. Disease is a derangement of this dynamic life force. This is nothing new. You guys know the concept. You know it really well. Just reproduce it well while you are writing that in your exams. ठीक है? और अभी जैसे certain words आ जाते हैं ना, तो you have to follow as it is in that manner only. ठीक है? आपके जो notes होंगे, they are going to be your notes, your OG ones. All right, but these are something, these pointers, if you've missed in your notes, you are going to add up. Okay, and make a full proof draft for your chronic miasms by J.H. Allen. All right, तो ये समझता है सबको? The primary curse, okay, from mind to body. तो ये क्या है? Something which we can call as a set format for our disease concept. यहाँ से शुरू होगा, यहाँ खत्म होगा, बीच में जो होगा वो पढ़ने वाले. ठीक है, primary something very basic, curse something which is unpleasant yet inevitable. From mind to body is the cause of the disease, right? तो my fourth year students, you will have to know first the PNEI axis well enough. ठीक है, अपना कोई भी disease course अपन पढ़ लो, अपने कोई भी disease का progression, कोई भी prognosis, ठीक है, when you want to explain that thing, you should know psycho neuro endocrine immunology axis well. ठीक है, आप यहाँ पे relate कर पाओगे. ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन start हो रहा है Allen's view for the Sora to initiate in that person. वो miasm कैसे develop होने वाला है. Okay, by initiate I mean develop होने वाला है. ठीक है, तो ये तीन level पे है. First being the spiritual ego,
ईगो इज व्हाट, नॉट द ईगो दैट वी यूजुअली टॉक अबाउट टू पीपल, इसका ईगो बहुत बड़ा है, इसका ईगो को हर्ट हुआ, इट्स नॉट दैट. ओके, ईगो, इड ईगो, सुपर ईगो वाला. सिगमंड फ्रूड गेव द कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी, रिमेंबर योर फर्स्ट ईयर वेल, राइट? तो वो पार्ट में प्रॉब्लम क्या होगा? डिजीज बिगिंस विद द सिंस एंड डिसओबीडियंस ऑफ मैन, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग एक्शन, रॉन्ग बिहेवियर. ठीक है, रिमेंबर फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने बात की थी कि जब आइडियोलॉजी ऑफ द बुक शेयर हो रहा था, दैट टाइम एलन, what Alan has told, Alan believed that Sora will develop only when the conscience of that man is contaminated. ठीक है, जब वो sin कर रहा है, ओके, तब जाके बैड एक्शंस, बैड बिहेवियर, जो सारी चीजें होती ना, ऑल द बैड पार्ट ऑफ इट, देन the sora develops. Okay, same thing carries forward over here along with thrives on unfulfilled ego. ठीक है, अभी ईगो एक ऐसा पार्ट है जो इम्पल्सिव है, ठीक है, जो ग्रीडी है. ओके, द ईगो कैन नॉट डिसाइड, उसको चेक में रखने के लिए देर इज सुपर ईगो. ठीक है, तो कितना कहाँ पे उसका इम्पल्स है, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है फॉर सम और द अदर रीजन, एंड देन द पर्सन एंड्स अप डूइंग स्टफ वी ही डजंट हैव टू, एंड देन देयर फॉर्म रिग्रेट्स, देयर फॉर्म्स गिल्ट्स एंड अ लॉट ऑफ स्टफ टुगेदर. ठीक है, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है. ईच ऑफ दिस पॉइंट विल एक्चुअली टेक अप अ लेक्चर, बट वी डू नॉट हैव सो मच टाइम बिफोर योर एग्जाम्स, सो अभी के लिए वी आर गोइंग टू कीप टिल दिस पॉइंट. वर्ड्स आपको सेम या सिमिलर ही लिखने हैं. ठीक है, ये एलन के वर्ड्स है, ये अपने वर्ड्स नहीं है. ऑलराइट, सो द स्पिरिचुअल ईगो, सेकंड लेवल इज द मेंटल इन्वेजन. ओके, एक बार वो ईगो अनफुलफिल्ड रह गया, जहां पे डिसओबीडियंस ऑफ द मैन इन द माइंड आ गया. ठीक है, इफ इज सिंड, तो माइजम इज फर्स्ट एम्बेडेड इन द माइंड. वहां से शुरू होगा डिस्ट्रॉयज होप, रीजन एंड करेज, ब्रिंगिंग अ स्टेट ऑफ लो स्पिरिटेडनेस. ठीक है, लो स्पिरिटेडनेस का मतलब क्या है? समथिंग, यू नो, where you lose interest in something, now you do not like something as you used to like it earlier, or you know, you're just too lazy, lousy, and कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एंड ऑल ऑफ इट. तो जब वहां पे एक बार, यू नो, द लेथार्जी हिट्स द मेंटल प्लेन, इट इज वेरी इजियर एंड वेरी स्मूथ फॉर द डिजीज टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स द फिजिकल पार्ट ऑफ इट. ठीक है, वहां पे आएंगे आपके फिजिकल manifestations. तो the physical manifestation में internal turmoil is thrown outwards, alters the physical body and manifests as external disease entities. एफोरिज्म 210 to 230 याद है मेंटल डिजीजेस का? उसमें हैनेमन अपने को क्या कहते हैं? हैनेमन टॉक्स अबाउट वन टाइप ऑफ मेंटल डिजीज विच इज कॉल्ड एज साइकोसोमैटिक, राइट? साइको मेंटल लेवल पे स्टार्ट हो रही है, सोमैटिक फिजिकल लेवल पे एंड हो रही है. ठीक है, वो जाके आगे वन साइडेड बन जाती है, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स सिमिलर. ठीक है, तो उस पे ज्यादा ध्यान देना है. आई होप वी आर क्लियर विद दिस वन. नेक्स्ट, the mighty octopus, Sora as the universal base. Okay, Sora being so important, Sora being given titles like the mother of all miasms, Sora being told as Hydra headed, now Sora being called as an octopus, ठीक है, with all its multiple tentacles going around. ठीक है, तो वो क्यों ऐसा है? Each tentacle is thus so widespread that it covers all the symptoms from the mental and physical level. ठीक है, जब हम लेटेंट सोरा की स्पेशली गाइस बात करते हैं, यू रियली डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग इनसाइड दैट पर्सन, इनसाइड दैट पेशेंट. ठीक है, आपको जो ऊपर ऊपर का दिख रहा है इज नॉट इवन द प्रोसेस ऑफ इट. Okay, that is what the body has just thrown outwards, that's just a sign कि there's something fishy going on inside, right? तो जब सोरिक माइजम की बात करते हैं, तो वो एक बेसिक प्रिंसिपल बन जाता है डिजीज एक्सप्रेशन का. यू आर नॉट गोइंग टू राइट अवे से, अरे नहीं ये तो डायरेक्ट वंस द पेशेंट डायरेक्ट फ्रॉम द स्टार्ट इट इज सिफिलिटिक माइजम. नो ब्रो, नो, इट स्टार्टेड ऑफ विद सोरा फर्स्ट. ठीक है, वहां से आगे जाके डिपेंडिंग ऑन द miasmatic soil of that person, diathesis, inheritance, ये वो सारी चीजें मिला के then it comes along to a final miasm जिसकी manifestations आपको physically बाहर दिख रहे हैं. ठीक है, तो बेसिक माइजम क्या रहेगा? सोरिक माइजम रहेगा. उसी के अंदर अगर ब्रीच होगा, ब्रीच मतलब देयर इज अ ब्रेक इनटू इट, ओके, तब जाके होगा एक गैप, और वो गैप्स में से आएगा dysfunction. Now that dysfunction will depend, it is going on which level. Okay,
so deprives the blood of oxygen, devitalizes the blood, induces sepsis and all of it. As it is, you have to write this. The mask, it assumes varying forms over history, ठीक है, from plague to malignant age to leprosy to tuberculosis. आपको ये एक सेट चीज में नहीं पता चलेगा कि सोरा है, सोरा में 1 2 3 4 and 1 2 3 4 in the patient as well. No, it is going to mask up a lot many troubles जैसे वो पिछले हिस्ट्री में कर चुका है. Okay, so we write this as it is. All right, so we are going to see the physiological deflection right now. ठीक है, तो जो सामने आपको straight bright light दिख रही है, that is the perfect bond when the miasm is working up in harmony with the vital force. ठीक है, there is no disorder, it is in perfect order and it is working well. तो तभी सबसे optimum level पे the person is functioning. ठीक है, क्योंकि वो apparently diseased नहीं है. All right, but when there is a constant bombardment, okay, over here, of the noxious environmental influences, when the organism is constantly exposed to the environmental stress and noxious influences, tab hota hai ek deflection. Okay, this deflection is the engrafting one, which alters the normal action of life, diverting harmonious physiological expressions into disease conditions. ठीक है, याद है हार्मोनियस फिजिकल ऑपरेशंस वगैरह, वाइटल फोर्स का डेफिनेशन ओवर हियर विल वर्क वंडर्स इफ यू इंक्लूड दैट इन योर आंसर. तो जब हम डिजीज डेफिनेशन भी बोलते हैं, व्हाट वी से, इट्स द डिरेंजमेंट ऑफ द प्रीवियसली हेल्दी वाइटल फोर्स, राइट. तो हेल्दी वाइटल फोर्स थी, परफेक्टली काम कर रही थी along with the miasm, no side effect, no effect, nothing at all. Okay, but when it was triggered by these noxious environmental agents, when it was contaminated, okay, in the words of Allen, ठीक है, तब जाके होता है एक physiological deflection, and that deflection then gives rise to a disorder. The timeline of decay, which means how it goes from functional to pathological. Okay, so the primary action, the functional turmoil status, no true pathology exists yet. Okay, functional is entirely at the functional level, guys. Action over here is the vital forces deranged dynamically, right. Symptoms are internal distress, behavioral shifts, subtle change, functional changes in digestion and excretion. जो हम जनरल लेवल पे पेशेंट्स को यूजुअली पूछते हैं, राइट, फिजिकल जनरल्स एंड मेंटल जनरल्स, वो आता है यहाँ पे अपने फंक्शनल स्टेट में. ओके, then comes the secondary or the tertiary expression, which means the pathological changes, the pathological structures. Here status is the body reacts physically to the dynamic derangement. Dynamically the derangement, the disease has already started. ठीक है, अब वो जाके फिजिकली कैसे मैनिफेस्ट करेगी, कम्स इन द सेकेंडरी और द टर्शरी एक्सप्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन है द परवर्टेड लाइफ फोर्स बिल्ड्स फॉल्स स्ट्रक्चर्स टू कोप. ठीक है, ये सारे कोपिंग मैकेनिज्म्स है अपने बॉडी से, mind you guys. Okay, these manifestations are formed in the form of tumors, enlarged glands, fibrous growth, structural gaps in nature. Okay, easy to understand. Next, the slumbering state, which means latency and activation. ठीक है, अब जो सोरा है अपना, वो एक लेटेंट फेज में रहेगा till the time it is triggered by that exact amount or the exact intensity of that exciting cause or the triggering factor or the noxious agent, कुछ भी आप उसको नाम दे दो. ओके, वहां वो जो पॉजिटिव एजेंट जिस इंटेंसिटी में लग रहा है, जब एक्ट करेगा, दैट टाइम दैट सोरिक स्टेट इज गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड. ओके, तब मिलेगा आपको एक एक्टिव एक्सप्रेशन. ओके, सो लेटेंट स्टेट है ना, ये बेसलाइन की तरफ होता है. जो सोरा रिमेन्स क्वाइट स्लीपिंग फॉर इयर्स, अ रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंटेंटेड माइंड कीप्स इट एट बे. अब रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, द वन हु इज वेल इनफ, मजबूत आदमी, ओके ना, मजबूत इज नॉट जस्ट बाय द बिल्ट ऑफ इट, मजबूत वो उसका माइजमेटिक सॉइल इज दैट मजबूत, द माइजमेटिक सॉइल इज दैट स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो उसके लिए अगेन उसका न्यूट्रिशन होता है, गुड थॉट्स एंड ऑल ऑफ इट, राइट. अभी एलन हैज ऑलवेज टोल्ड अस, सोरा कब इनिशिएट होने वाला है माइंड में, जब बैड थॉट्स आएंगे, राइट, बैड बिहेवियर, कंटामिनेटेड कॉन्शियंस वगैरह ये वो. ओके, जब सिन एंड ऑल ऑफ इट, तो जब
when the person is thinking well, when the person is in good health mentally and physically, so that constitutes a robust constitution according to Allen. ठीक है, तो जब वो रहेगा, so the sora is still going to be sleeping, matlab it's going to be in the latent stage for years together. Okay. Exciting factors अपने causative agents could be physical injuries or unusual physical events, emotional sudden joy, deep grief or sudden fear, lifestyle, overwork, mental fatigue or dietary disturbances. ठीक है, these are all very common ailments from that we usually study in our materia medica. ठीक है, यही बन जाते हैं अपने exciting factors या causative factors. उसके बाद आता है active expression. You can see all this going up high. So the key insight over here is, if it were not for latent sora acting as a foundation, other miasms like syphilis and psychosis could not infect the organism. हम लोग ने अभी यहाँ पहले थोड़े टाइम पहले पढ़ा था, right? कि कैसे the breach in this sora part of it, the breach in the latent sora will give rise to give entry to the other miasms, right? So this is what we were talking about then and now. Latent sora, causative factors or the exciting factors, and then comes the active expression. ठीक है, तो अभी आप स्क्रीन पे द माइजमेटिक स्पेक्ट्रम करके यू कैन सी दिस टेबल. ओके, सो सोरा इज फॉर्मिंग द बेस, साइकोसिस इज फॉर्मिंग द ब्लेंडेड माइजम एंड सिफिलिस इज द डिस्ट्रॉयर. ठीक है, अपने को पता है सोरा फंक्शनल, साइकोसिस स्ट्रक्चरल, सिफिलिस डिस्ट्रक्शन. द सेम इज कैरिड फॉरवर्ड हियर. द नेचर, एक्शन और प्रोग्नोसिस के बेसिस पे वी आर गोइंग टू स्टडी देम ऑफ. अभी थोड़ा शॉर्ट में, द नेचर इज द फाउंडेशन रूट, often presents as itch and eruptions, nothing new, creates functional turmoil and false structures, generally good when treated with similimum. Obvious सी बात है, 80% of psychosis में 80% blended with sora. Action manifests commonly as toothaches, neuralgias and catarrhal troubles. Okay, we are going to write these as it is. Treatment: in tertiary stages, suppressed discharges cannot be re-established. Instead, watery skin eruptions appear on the skin. ठीक है. Syphilis, deeply destructive, requiring the soric gateway to enter action, absolute destruction of the organism. Prognosis, grim or poor without profound dynamic intervention. Alright. Now the surface solution हम ये देख चुके हैं पहले भी, राइट? ये अपना आइसबर्ग था. जो नीचे है is the primary manifestation, the latent, the sleeping part of it, okay, which forms a serious concern for us as physicians. That is the primary manifestation, the dynamic derangement, spiritual ego, and embedded miasm. The deep-seated entity, the fraction of the whole disease, what escapes observation is far more dangerous than what is visible. Okay, secondary manifestation ये is छोटा सा tip of the iceberg is what we see when we see skin eruptions, local itch or some external pathology. The protective wall, the vital force, throws the disease to non-important parts of the body to relieve the internal turmoil and save vital organs. The self-preservating quality, the self-preservation of the vital force. Okay. नाउ द डेंजर ऑफ सप्रेशन पहले भी हमने किया है लास्ट वीडियो में, एक क्विक रिकैप यहाँ जरूरी है एंड मेंशन ऑफ इट as well. Applying empirical lotions, ointments and heroic medicines to cure the surface eruptions. The result, it drives the enemy temporary back, suppressing the relief valve and creating a new drug miasm that masks the original disease. ठीक है, एक प्रेशर कुकर को आप प्रेशर देके सिर्फ गैस पे चढ़ा के रखोगे, व्हाट हैपेंस टू इट, राइट? इवेंचुअली जो भी उसमें सामान है it's going to get burned up, right? There'll be a point when the pressure inside is so high that it will end up exploding. Same happens, the similar thing is happening when you suppress diseases to a level that the body cannot take it any longer. ठीक है, फिर उसके बाद में the body is so drugged, it's so over drugged, फिर end में whatever you symptoms you get is not even of the disease, it is more of the drugs that has been given earlier as a mode of suppression. ठीक है, और जब
we treat the totality. When we treat the person as a whole and never prescribe based only on pathological names, we identify the active miasm dynamically. The result, it mitigates the internal cause, allowing the local surface symptoms to disappear naturally. Having said that, it does not mean the diagnosis of your disease is important. The diagnosis is important so you know what is going to be the disease cause. You can relate well to your miasm. Okay? This is where the clinical part of Organon comes into picture. All right. Next, three common errors that we have in our homeopathic practice, guys. Improper remedy selection, the most critical error, prescribing based on fragment of the disease rather than the totality of symptoms and active miasms. ठीक है, जब हम usually सिर्फ specifics के लिए जाते हैं with no experience in it at all. ठीक है, specifics देना is not incorrect, but specifics ही हमेशा देना is also not correct. Okay. तो एक प्रॉपर सिमिलिमम देना है बेस्ड ऑन द टोटलिटी और द पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज. Improper potency, remedy is right, potency is wrong. Again, there is going to be no or less effect or not a sustained effect in the patient. The recovery is either going to be short and back to SQ, or it is not going to be at all. It's always, remember igniting the vital force to act up. यहाँ पे बात कर सकते हैं हम लोग primary action and secondary action of the vital force की. ठीक है, but अभी के लिए we are going to take it only as the improper potency, choosing the wrong strength, failing to perfectly match the dynamization of the drug to the vibration of the vital force. Third is lack of patience, interfering too early, failing to allow the remedy sufficient time to act out its curative influence on the chronic condition. Right? 3 दिन की दवाई दो पेशेंट को, बोलो वापस 4 day, और then you end up giving some other medicine for an acute, right? Or if you're giving for a chronic one, you give some constitutional remedy that you think is right, call the patient after 1 month or 15 days and again drug him off. तो यहाँ पे तो आप ही ओवर ड्रग कर रहे हो पेशेंट को. वेयर हैज द सिंगल सिंपल रेमेडी गॉन? ठीक है, आर वी इवन स्टडिंग द ड्यूरेशन ऑफ रेमेडीज for that matter? If not, then please start studying that as well, guys, because it works. It works in your practice and it gives you very good results when you start working organon repertory and together. ऑलराइट, तो ये तीन कॉमन एरर्स हो जाएंगे जो अपने होम्योपैथिक प्रैक्टिस में है. नाउ दीज एरर्स स्टेम फ्रॉम नेग्लेक्टिंग द लॉज ऑफ ऑर्गेनॉन इन फेवर ऑफ मियरली स्टडिंग रेमेडीज. इसीलिए कोरिलेशन इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. ठीक है, ना न्यूटन का लॉ तो अपने को पता ही है, देयर थ्री लॉज ऑफ मोशन, राइट? सो द थर्ड वन इज, first one is law of inertia, second is law of acceleration, third comes law of action. So for every action there's an equal and opposite reaction. All right, so the universal law is action and reaction are equal but opposite in nature. If the life force is deflected by disease, the reaction causes profound disease expression. Okay, now what we'll do with homeopathic medicines, we are going to give a solution to it through similia similibus curenta, like cures like. Only the dynamic power of the law of similars matched through the dynamization of drugs is sufficient to eradicate the widespread tentacles of Psora. Psora का ऑक्टोपस देखा था हम लोगों ने, राइट, पहली पहली स्लाइड्स में. सो उसको कंट्रोल करने के लिए वी कैन ओनली गिव ऑन अ डायनामिक लेवल. अगर डिजीज डायनामिक है तो उसका क्योर भी डायनामिक ही होगा. ठीक है, यहाँ पे अरेस्टिंग द क्योर मीन्स टू ट्रीट अ पोस्ट रेमेडी सिम्टम लाइक डायरिया with antibiotic means immediately arrests the curative action. जब क्योर अच्छा भला चल रहा है, ठीक है, and post remedy symptom, after you give a remedy and there's like suppose diarrhea happening, but with antipathic means you immediately arrest the curative action. You give something, you give, अगर डायरिया हो रहा है, ठीक है, तो आप पेशेंट को क्या दोगे? Something which is going to stop his diarrhea off, not understanding that this is your remedy symptom. यहाँ पे becomes symptomatology becomes important for you guys. ठीक है, जो बहुत हम लोग neglect करते हैं, but then yep,
If you want to get organon into your clinical practice, you will have to know your all your concepts well enough, even while studying philosophy. The organon 6th edition one. Okay. Synthesis or the proof of true cure, the victory of the vital force. सेकेंड रिएक्शन जो बात करते हैं, when the latent symptoms develop or old surface eruptions return after a well selected remedy, do not panic. The vital force is expelling the internal turmoil back to surface. Herring's law of cure भी यही बोलता है, right? The ultimate proof of an antisoric cure is the reappearance of the old suppressed symptoms. So clinical example here was in psychosis. This may present as bladder irritability, dysuria, or urates in the urine as the body throws off the miasmatic burden. Okay, now very important to end this lecture with the highest duty, the non interference. The fundamental rule is a carefully selected homeopathic antisoric remedy must be allowed to act as long as it continues to exercise a curative influence. Okay, the physician's role is to watch patiently. Troublesome symptoms will disappear in their natural order. Do not disturb the first remedy while it benefits the patient. Single simple remedy takeaway is the true healing is not the constant application of force, but the perfect alignment with the dynamic laws of नेचर. ठीक है, रेमेडी रेपिटेशन आपको कब करना है, रेमेडी रिपीट आपको कब नहीं करनी है. All right, posology, medicine reputation, all of it together forms the clinical basis and an important part of treating miasmatic cases like these. Okay, so this was Alan's view regarding Sora. We are going to have another small part as well, which will come up in the next video. So stay tuned, guys. Learn well. I hope this was effective and you've got certain insights about this topic. Any queries, please DM me on the Instagram handle at the Organon Classroom. Study well, have fun, and all the best. Thank you so much.